मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं व्हाट इज डेल क्रेडर एजेंट। फ्रेंड्स, डेल क्रेडर एजेंट जो होते हैं दे आर जस्ट लाइक अ नॉर्मल एजेंट जिन्हें प्रिंसिपल अपॉइंट करता है टू सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। लेकिन स्टिल इनमें और जो नॉर्मल एजेंट होता है एक डिफरेंस ये होता है कि जो डेल क्रेडर एजेंट होते हैं वो गारंटी करते हैं पेमेंट टू सप्लायर। मान लीजिए ड्यू डेट है, बायर फेल्स टू मेक पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन द ड्यू डेट है और जो बायर है वो नहीं प्रिंसिपल को पैसे दे सकता है, दे पाया कोई कारणवश से, तो डेल क्रेडिट एजेंट व्हाट दे डू इज कि दे मेक पेमेंट टू द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। और इसी कारण से जो कमीशन पेड टू डेल क्रेडिट एजेंट होते हैं वो रिलेटिवली हायर होता है देन पेड टू अ नॉर्मल एजेंट। सो वी कैन से इज a Dell Credere agent is a selling agent who is engaged by a principal to assist in supply of goods or services by contacting potential buyers on behalf of the principals. And the difference between Dell Credere agent and normal selling agent is that they guarantee the payment to the supplier. And in scenarios like where buyer fails to make the payment to the principal by the due date, Dell Credere agent make payment to the principal on behalf of the buyer, and for this reason that the commission paid to the Dell Credere agent are relatively higher than that paid to a normal agent. So this is the difference between the normal selling agent and the Dell Credere agent. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं शेड्यूल वन एक्टिविटी, para 4 of schedule 1 activity, that is import of service from a related person without consideration but in the course of business shall be treated as supply. Friends, para 4 of schedule 1 कहता है जो लास्ट एक्टिविटी है that is treated as supply even though without consideration is import of service हो रहा है अगर related person से। रिलेटेड पर्सन हम लोग ने डेफिनेशन में देखा ही है, व्हाट आर द रिलेटेड पर्संस, वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्संस। तो अगर इंपोर्ट हो रहा है उनसे लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस even without consideration will be treated as supply. Let us understand by an example. Shashi Associates received the consultancy services from the head office which is located in Malaysia. Okay, the head office has rendered such service free of cost to the branch office. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक शशि एसोसिएट्स जो है वो जिसका हेड ऑफिस जो मलेशिया में है और जो ब्रांच ऑफिस शशि एसोसिएट्स इंडिया में है वो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है अपने हेड ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कंसिडरेशन इज पेड। Since they are related persons, Shashi Associates being the branch office and the head office are related persons, तो जो भी ये import हो रहा है इस पे जीएसटी लग जाएगा क्योंकि भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ये जो है import हो रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो यस जीएसटी विल बी लेविएबल। Now we will see the schedule 3 activities, that is the negative list under GST, which is neither supply of goods nor treated as supply of services. The first such activity is services by an employee to the employer in the course of employment. The second such activity is services by any court or tribunal established under any law for the time being in force. The third such activity is functions performed by the member of parliament, member of state legislature, member of panchayats, member of municipalities, member of other local authorities. The fourth such activity is duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provision of the constitution. Thereafter, the funeral services including transportation of deceased, sale of land or building, and the last one is actionable claim other than lottery, betting, gambling.